बुनियाद से बुलंदियों तक. Just as a deep foundation allows a skyscraper to soar, strong foundational skills are the bedrock for a lifetime of upward mobility. The Usha Silai School program is a shining example of this. It doesn't just teach sewing, it empowers women to become entrepreneurs, leaders, and change makers. The mission with which the Usha Silai School program is driven is sustainable in itself. Even after projects and training programs formally conclude, the women of the Usha Silai schools continue to thrive and advance because a strong start sparks unstoppable, self-sustaining growth. Our story begins in Lolab, a serene village in Kupwara, Jammu and Kashmir, where we met Asmat Ara, a 27-year-old woman who turned heartbreak into hope. After losing her father, Asmat needed direction and found it in a 9-day training course under the Usha Silai School program, implemented in partnership with SIDBI and Education and Livelihood for All Foundation. 9 days. That's all it took for Asmat to flip the script from uncertainty to action. It wasn't grand, it wasn't loud. It was practical and hands-on. 3 years back, she began at home with just a table, a sewing machine and a door that stayed open. First came alterations, hemming school uniforms, fixing blouses, tightening waistbands. Word spread, confidence grew and revenue followed. Rupees 4,000 to 5,000 a month. More importantly, the classroom did not stay empty. One learner, then another. Today, 16 women have trained under her watch and more keep coming from nearby villages. मेरा जो काम था वो घर तक ही महदूद था, तो अपना ही काम चलाती थी इससे. लेकिन जब से ये स्टार्ट किया तो मेरा इनकम जो वो काफ़ी बढ़ गया, जिससे मेरा नाम भी बढ़ गया और काम भी बढ़ गया. तो मेरी घर की ज़रूरत भी पूरी होने लगी. What brings women here? It's a mix. Practical lessons, patient teaching and a safe space. Here learning isn't rushed. Mistakes are expected. Progress is celebrated and there's a rhythm to it. Morning batches for those juggling home responsibilities. Afternoon slots for college goers. Flexible timing for everyone. In this room, skill is currency. Confidence is the interest on it. And the community is the bank. मैंने इनको ट्रेनिंग दी और ये अच्छे से आज सीख रहे हैं. इनको मतलब इनका अच्छा काम चल रहा है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये अच्छा कमाती अपने घर के लिए और अपने लिए भी अपने पैरों पे सेल्फ कॉन्फिडेंट बन गए हैं, इंडिपेंडेंट बन गए हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ये मेहनत जो है वो रंग लाई. While each project has a defined duration, Usha's relationship with the women goes far beyond it. Through partners, trainers and digital networks, helping women rise even higher. Asmat's journey reflects this enduring partnership. Even when the project officially concluded, her growth did not. With Usha's continued remote guidance and her own determination, she went on to take up larger responsibilities. As a local resource person, a coordinator with self-help groups, and eventually as the manager of a common service center. She helps women register for government schemes, decode forms, and access benefits that were always theirs, just opaque and hard to reach. Her Silai School is now a trusted stop, not just for stitching but for solutions, practical, immediate, and local. जो मैं ये CSC का काम करती हूँ उसमें मैं ऑनलाइन जो काम होता है, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होती है वो मैं कर लेती हूँ. जैसे कि कार्ड्स बनाने होते हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भरने होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ. तो पैसे निकालने होते हैं वो भी मैं यहाँ से देती हूँ उनको. तो बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको. Asmat Ara's story is a powerful reminder that strong foundations lead to lasting success. The Usha Silai School program has given thousands of women the courage and capability to dream big and achieve beyond just securing income for survival. With a sustainable foundation laid in the beginning, Asmat has now evolved to become a mentor for her learners, guiding them through different walks of life. These stories prove that even a small step can create a ripple and sustained reaction of change.
This model is more than today's skill, it's tomorrow's leadership. When a woman runs her own micro-enterprise, she becomes a decision maker. When she teaches others, she becomes a leader. When she helps them access schemes, she becomes a bridge. मैं मतलब घर में ही ज़्यादातर रहती थी, कोई मुझे जानता ही नहीं था कि मतलब ये कौन है, क्या कर रही है। जब मैंने उषा सिलाई प्रोग्राम ज्वाइन किया तो अपना ये स्कूल खोला, तो आज मुझे लोग काफ़ी इज़्ज़त से जानते हैं और मेरा काम भी काफ़ी अच्छा चलता है। उषा सिलाई स्कूल की तरफ से जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है इंडिपेंडेंस और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो इनकी तरफ से मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिला, तो आज मैं अपने टांगों पर खड़ा हूँ, तो मैं कहीं पर भी अपना रोज़गार कमा सकती हूँ और मैंने जितने ये लर्नर्स ट्रेन किए हैं वो भी अपना रोज़गार कमा सकते हैं। Asmat Ara is just one of the many women who have shown that all it takes is intent and the right kind of training for a lifetime of sustained benefits. With a strong base, women build on what they have been taught to create opportunities for themselves and others around them. The Usha Silai School program is not a 1 year or a 2 year program. When the women get selected for the training process, it starts a lifelong association with them. So the first few women whom we started the program with in 2011, we continue to support them and encourage them to do better as we keep adding more and more women to this network. We realize that many of these women have been able to evolve because of the strong foundational skills which were given to them at the beginning of the career. This is a reflection of the strength of the Usha Silai School program's design as well as its focus on impact and sustainability. Another story to prove how strong foundational skills lead to financial self-reliance and lasting empowerment comes from Mustafabad, Unnao, a small village where most families still depend on daily wages and farming. 13 years ago, nothing here suggested that one woman could change the reality. क्या शुभ नाम क्या है आपका? प्रीति कुशवाहा। उषा कंपनी है। उषा कंपनी के द्वारा SPPI संस्था है। SPPI से संस्था से हम लोग जुड़े, उसके बाद उषा कंपनी वालों ने हमको ये ट्रेनिंग दी। Today, a new two-story house is rising, brick by brick, funded entirely by Preeti Kushwaha's earnings from her Usha Silai School. 13 years ago, Preeti, then 27, stood at a crossroads. She had left school early because her family couldn't afford her education. Married into a farming household, she had one dream: to learn a skill that would make her self-reliant. पापा मेरे कपड़े की दुकान में काम करते थे, तो इसी वजह से कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से हम पढ़ाई भी नहीं कर पाए। 18 साल के थे जब हमारी शादी हो गई थी। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शादी जहाँ पे हमारी की नॉर्मल परिवार था, बहुत ज़्यादा नहीं था कि हम हर चीज़ अपने पसंद की ले सकें या कर सकें, या बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ की भी अच्छी नहीं थी। तो मेरे मन में शुरू से ही लगता था कि हम कुछ काम करें, कुछ पैसा हमारे पास भी हो, तो घर की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हम अपने हस्बैंड की मदद कर पाएँ और घर का मेंटेन करवा पाएँ। When Usha's ground-level implementing partner NGO Sarvodaya Ashram announced a 7-day residential training under the Usha Silai School program that had recently launched, her in-laws opposed letting Preeti join. Women in the village did not travel alone. But Preeti convinced them and went for the training. She returned with an Usha sewing machine, a newly learned skill, and the confidence to begin her journey as an Usha Silai School women entrepreneur. And she began teaching from her courtyard. जब हमने इतना स्कूल शुरू किया था, उस समय तो ये नहीं लग रहा था कि हम इतना अच्छा अपना घर परिवार, अपने परिवार की ऐसी मदद कर सकेंगे, इतना हम कमा सकेंगे। उस समय तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ जो थी, जो संघर्ष था, वो थोड़ा ज़्यादा ही कठिन था। लेकिन धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए, करते गए। कोविड में काफ़ी अच्छा ऑनलाइन भी हम क्लासेस करवाने लगे लोगों को। जैसे ही हमारा वहाँ स्कूल बंद हुआ, धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ता गया और जो हमारी सोच थी उससे हम कहीं ज़्यादा निकल गए आगे। Preeti's first income was just ₹150 for stitching a blouse. A small amount, but a big milestone. From that humble start, she has trained over 5,000 women, become a master trainer, a local resource person, and a certified trainer assessor under PM Vishwakarma Yojana.
This is the essence of Usha Silai Schools, walking alongside women as they rise from marginalization to becoming leaders and change makers. वेस्ट हिप और स्लीव्स और कफ बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक साधारण सी ज़िंदगी थी और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था कि अगर बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन करवाना हुआ तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था। घर की छोटी छोटी ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसके लिए भी सोचना पड़ता था, पैसों के लिए। आज है कि मेरे बच्चे हैं, जो बेटी मेरी डॉक्टर बनना चाहती है, आज बेटा हमारा एनडीए में जाना चाहता है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है, वो भी कोचिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के अपने जीवन में लगता है कि हाँ, हम किसी चीज़ से जुड़े हुए थे तो आज हमारी भी ज़िंदगी बेहतर है और बच्चों का भी हम भविष्य बेहतर बना पा रहे हैं। From a woman who once needed permission to step out, Preeti has gone on to represent Usha Silai School at the highest level. Even gifting Chief Minister Yogi Adityanath a portrait stitched entirely on an Usha machine. This is because even after 13 years, she remains an integral part of the Usha Silai School network through her symbiotic relationship, where Usha benefits from her rich experience and she continues to grow with Usha's guidance and support. Today, Preeti earns between 35,000 to 40,000 every month, an income that speaks of her freedom, dignity and possibility. With her earnings, she is building her dream home, setting up her husband's kirana shop and oil expeller unit, and securing her children's future through education. But her success does not stop with her own family. Many of the women she has trained are now earning independently and with confidence. Preeti's journey is a testament to sustainable growth driven by her grit and Usha's unwavering support. अगर हम प्रीति जी की केस में बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण एक है कि प्रीति जी का प्रगतिशील आचरण, जो उषा ने उनको कांस्टेंट सपोर्ट दिया है राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड टुडे वी आर इन 2025। तो लगातार जो कांस्टेंट सपोर्ट जो उषा से उनको मिलता रहना चाहिए, चाहे वो मशीन से संबंधित हो, चाहे वो कोर्स करिकुलम से रिलेटेड हो, और फिर चाहे उनको मास्टर ट्रेनर बनाना हो, चाहे उनकी सिलाई के कौशल में और अधिक उनमें काम करना हो। जैसे कि दीदी ने बताया कि वो गोवा गए थे, तो गोवा में उन्होंने जो हमारे फैशन डिज़ाइनर थे वेंडल रॉड्रिक, तो उनसे ट्रेनिंग ली। तो इस तरीके से उषा इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जितनी भी जो प्रगतिशील महिलाएं हैं जो आगे जाना चाहती हैं, तो उषा उसमें उनके साथ में हमेशा से आगे रहता है। जो सहयोग है जो उषा उनको कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा है, ये एक मुख्य कारण है कि बहनें आगे तक की जा पा रही हैं। More than a decade after the formal project ended, Preeti still runs her Silai school, still gets calls from Usha for new trainings, still teaches 10 learners at a time. The partnership ended, but the empowerment never stopped. One sewing machine, one determined woman. A foundation so strong that 13 years later, it still lifts an entire family, a village and thousands of learners. आज आप लोगों को 3 मंथ कंप्लीट हो गया ना? Preeti Kushwaha is living proof. When you give a woman the right start and keep the support alive, she doesn't just survive, she builds a legacy. आदमी तो पैसा कमा के ला रहा, और महिला भी अगर अपने घर पे सिलाई की मशीन रखे हुई है और उस सिलाई की मशीन से 4-5 महिलाओं को सिखा देती है, तो उससे फ़ीस ले लेती है। अपने कपड़े भी 2-3 सिल लिए, 250-300 रुपये उससे इनकम हो गई। अगर उससे जो इनकम हुई उससे बच्चे उसके स्वावलंबी होंगे, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, परिवार को भी आगे लेकर चलेगी, और गांव में लोगों की भी बीच उसकी छवि दूसरी हो जाती है। पहले वो बोलती थी ये राम दुलारे की पत्नी है, अब वो बोली जाती है उषा सिलाई स्कूल की दीदी हैं, उषा वाली दीदी आ गई। मतलब परिवर्तन काफ़ी हुआ है। After the break, we travel south to Tamil Nadu, where the women of Tenkasi are transforming their lives through the Gandhigram Trust Training cum Production Center. Brought to you by Usha.
This is the Gandhigram Trust Training Cum Production Center in Tenkasi, Tamil Nadu. The Gandhigram Trust continues the vision laid out by its founders and inspired by Mahatma Gandhi, strengthening village life through practical support. Since its establishment in 1947, the Trust has worked to provide employment and rehabilitation, with a special emphasis on improving the quality of life of rural women in this region. நான் பக்கத்தில் புதுக்குடியிருப்புன்ற கிராமத்துலேருந்து வந்துட்டு இருக்கேன். நான் பீடி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். 100 தூள் தான் சுத்த முடியும், அதுக்கு மேலே சுத்த முடியாது. அதுவுமே காலையில் அதிகாலையில் எந்திரிச்சாலுமே பீடி தட்டை தான் தூக்கும். அந்த தூள் வாடினால எனக்கு தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. In the villages across Tenkasi and neighboring districts, thousands of women earn their living by rolling beedis. The Gandhigram Trust works to address this by offering education, welfare support, and skill training that can lead to safer and steadier income opportunities. Our founders' foremost objective is to improve the economic and social status of the woman. So that we started the tailoring unit. So 20 years back we started training for the rural women. So now almost we train all the women in and around Sivasalam in tailoring. Then we start a production unit here. So initially Department of Environment and Forest, they support us. So at that time Usha Silai program was introduced by our head office, through our head office Gandhigram Trust. So all the women are trained in tailoring, but they don't know how to install the machine, how to repair the minor problems in their machine. So in this contest we required the support from the Usha Silai. They train our almost 30 women we trained, I think. Through its partnership with the Gandhigram Trust, the Usha Silai School program trained the first batch of 15 women in the hardware aspects of the sewing machine, installation, minor repairs and maintenance in 2022. This was followed by training in garment finishing and cutting of blouses, shirts, kurtas, churidars and trousers. The 15-day program gave the women strong foundational skills. But what stood out for both the Usha team and the Gandhigram Trust was the way the women responded, with steady interest and a willingness to learn. Sudha is 48 years old and comes from a village in Tenkasi district. She is one of the participants who attended the Usha Silai School training at Gandhigram Trust and now works at the production center, where she also helps coordinate its activities. Attending the Usha Silai School training helped her transition from rolling beedis at home to working and coordinating activities at the production center. This is a big shift. எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னே நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கிராமம். அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா பீடி ரோலர் மட்டும் தான் இருக்குது, வேறு எந்த தொழிலுமே கிடையாது. அதைத்தான் நானும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு நைட்டு பகல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 100 ரூபாய்க்கு தான் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. அந்த தொழில் பண்ணுறதுனால குழந்தைகளுக்கும் ஆபத்து, எங்களுக்குமே ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த ஒரு தொழில் தான் எங்களுக்கு இருக்குது, வேறு தொழில் கிடையாது. அப்போ தான் உஷா ட்ரைனிங்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வந்தாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் கற்றுக்கிட்டு இன்னும் ஒரு 10-20 பேர் அந்த தொழிலை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். Advanced training was also organized for the women who continued to come to this training cum production center. As their skills improved, orders began coming in from universities and colleges because of the high quality and finish of the product. Orders also arrived from outside Tamil Nadu, including garments to be sold for online platforms. In fact, a monthly turnover of around 1 lakh rupees has now become a regular occurrence. This Usha Gandhigram Trust Abhay Ashram Center is one of the high earning center among our collective entrepreneurship model across India. See, as soon as completion of the training here in Gandhigram and Abhay Ashram Center, the women started visiting the center regular basis. For that, our partner Gandhigram Trust and Abhay Ashram has ensured in getting the orders for the women. So that motivated the women entrepreneurs to visit these Abhay Ashram centers on regular basis. So here basically we will not only provide technical training, so also we provide continuous support to the partners in terms of running the center regular basis. That makes our program very unique. Sudha's skill in sewing and garment finishing has grown steadily. She now trains other women, teaching machine handling and finishing techniques for the garments produced here. Not only has the income increased for these women, so has their confidence.
இந்த சென்டர் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எனக்கும் இந்த அதில் வருமானம் நல்லாவே இருக்குது, போதுமான அளவுக்கு. மற்ற பெண்களுக்கும் இதில் வருமானம் நல்லாவே ஓரளவுக்கு வீட்டில் இருந்து இருக்கிறதுக்கும் இங்கே வேலை பார்க்குறதுக்கும் நல்லாவே வருமானம் இருக்குது. வீட்டில் இருந்தால் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும். இங்கே வந்தீங்கன்னா ஆர்டரை பொறுத்து ஒரு 10,000 13,000 எவ்வளோலாம் ஆர்டர் கிடைக்கும், அதுக்கு தகுந்தாலும் அவங்களுக்கு சேலரியும் ரொம்ப அதிகமாகவே கிடைக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப இது பயனுள்ளதாக இருக்குது, எனக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. From Muthulakshmi and Vasanta Kumari too, having a bank account and a regular monthly salary has changed their day-to-day life and helped them meet their basic needs with ease. வீட்டில் இருக்கும்போது ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக என்னோட அந்த தேவைக்கு எனக்கு பைசா வரவே வராது. ஆனால் இங்கே வந்து எனக்கு மந்த்லி சேலரி தராங்க. எனக்கு அது நல்ல என்னோட தேவைக்கு அது நல்ல யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பேண்ட் சுத்தமாக தைக்கவே தெரியாது, கட்டிங்கும் தெரியாது. லாஸ்ட் இயரில் விஜயலட்சுமி மேம் உஷா ட்ரைனிங்லேருந்து இங்கே வந்திருந்தாங்க. அவங்க நல்ல நீட்டாக கட் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் 10 நாள் தான் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அந்த பிரின்ஸ் கட் ப்ளவுஸு சுடிதாரும் அதுவும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுவுமே இப்போ நீட்டாக நாங்கள் கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமௌண்ட் வாங்கி எங்கள் தேவைக்கு அது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தையல் வந்து ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். அப்புறம் இங்கே உஷா ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டு எல்லாமே ஃபினிஷிங் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு இங்கேயே தான் நான் வேலை பார்க்குறேன். இங்கே வேலை பார்த்தோன்னா இப்போ எனக்கு சம்பளம் எல்லாமே நல்லபடியாக கிடைக்கிது. கொஞ்சம் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என் கையில் இவ்வளோ வருமானம் வரும்போது ரொம்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ உஷா. The skills gained at this center have allowed many women to become trainers themselves, passing on their knowledge to others around them. Even after 3 years of formal conclusion of partnership, the Training cum Production Center, along with the trained women entrepreneurs, are thriving and expanding with every passing year. Thanks to strong foundational skills and steady support from Usha International Limited, these women are shaping livelihoods that bring lasting positive change to their communities. Brought to you by Usha.